आज का जो हमारा वेबिनार है, वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ एंटरप्रेन्योरशिप इन झारखंड. ऑफ लेट इफ वी सी, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव steps to promote youth entrepreneurship. I was recently going through the tourism policy, and then I saw that how government is trying to promote the private players. The government wants to act as a facilitator and want private players to come and work in tourism sector. Similarly, I learned about tribal students being sent abroad to study there in foreign universities so that they can come back in the state and work with other students, encourage them. So these are some developments, some good steps that the government has taken. मैं अपना सवाल शुरू करूंगा प्रोफेसर भगवान सिंह जी से, जो कि डीन एंड हेड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज हैं. भगवान सिंह जी, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो आपको झारखंड में किस, झारखंड का अगर हम स्टेट को देखें तो इट्स अ वेरी peculiar state where you have a lot of tribal population, rural population. तो वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो झारखंड की व्यवस्था, इट्स अ हिली एरिया और यहाँ रूरल ट्राइबल सेक्टर्स बहुत हैं एंड वी हैव गॉट अ क्रिएटिविटी इन देम. यहाँ पे क्रिएटिविटी का अपना चार्म है. झारक्राफ्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट इज कैरिंग. तो विजन के हिसाब से झारखंड हैज मोर पोटेंशियल. Though in the government index it is the poorest state, that doesn't matter because the many factories are here, many matlab whole India is here, even SAIL is here, all the top notch country world which are holding the economy, their headquarters and factories are over here. So वो problem नहीं है कि झारखंड के जो कंपनीज हैं वो बहुत रिच हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खनिजों में सबसे ज्यादा आगे है. तो यहाँ implementation may be one question, but thing is that कि what is the vision behind? Now Garuda is a project of defense where drones are working. Right. To be very frank, in Garud project, when MS Dhoni, the legendary of the Jharkhand, obviously he has invested his stake in it. और यहाँ ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज की अगर हम शुरुआत करें, जैसा कि बैंगलोर में हो चुका है, हिमाचल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली है एचपी एजुकेशन, हायर एजुकेशन पॉलिसी, जो कि हिमाचल प्रदेश से भी मैं हूँ, 8 साल में वहां पे भी फैकल्टी रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ मैं. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में मैंने कई गाइडलाइंस भी दी थी गवर्नमेंट को और आई एम लकी एनफ दे आर फॉलोइंग दोस. तो हायर एजुकेशन में, मेडिको में, चूंकि वहां अर्थक्वेक जोन है, तो उन्होंने ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज को सबसे प्रॉम्प्ट पे लिया कि अगर रोड भी ना रहे, कुछ भी ना रहे, अर्थक्वेक आ जाए तो हमारा कम से कम ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान हो जाए कि हमारी मेडिकल सुविधाएं ड्रोन से पहुंच जाए. तो उन्होंने मेडिकल एंड फूड में अलाउ कर दिया, एजुकेशन में अलाउ कर दिया है. तो हमारी झारखंड गवर्नमेंट जो है ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज या ड्रोन्स के ऊपर कितना काम कर रही है. और वो यूथ को आज आप शादी ब्याह में भी देखते हैं, ड्रोन्स के थ्रू फोटोग्राफी हो रही है, ड्रोन्स के थ्रू काम हो रहे हैं. एक तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है. दूसरा ट्रैवल एंड टूरिज्म, अगर उसकी कनेक्टिविटी हो, हमारे यहाँ सेंटर ऑफ टूरिज्म डेवलप हो. एक सेंटर हमारे ठीक यूनिवर्सिटी के बॉम्बे के सामने डेवलप है टूरिज्म पे, लेकिन वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म को कहाँ तक ले जा रहा है, इट्स देयर केक, तो दे विल टॉक बेटर ऑन दैट. बट अगर हम टूरिज्म कनेक्टिविटी को, जैसे हमारे वाराणसी सेगमेंट में गाइड्स हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं, उनको पता है कहाँ क्या सारनाथ क्या घुमाना है, क्या घुमाना है. ऐसे सेंटर्स हैं जो उनको ट्रेन करते हैं. तो इस तरह के अगर टूरिज्म ट्रेनिंग सेंटर्स भी हों, हमारे गाइड्स हो जो हमारे टूरिज्म पिच को, यहाँ पे डैम्स हैं, पतरातू घाटी है और भी एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जो टूरिस्ट के हिसाब से अच्छा हो सकता है. तो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर हो सकता है टू डेवलप द टूरिज्म. एंड कितना आगे, और सबसे बड़ा रिस्क तो हमारा स्पोर्ट्स है, जिसको संजीवा सिंह जी सर हैं, ये लोग देखते हैं. हमारे यहाँ अभी खिलाड़ी इतने आगे बढ़े कि मतलब हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है उन लोगों ने. ठीक, हमारे ग्राउंड भी बना रहे हैं. तो क्या हम ऐसी परफॉर्मेंस, जैसे शूटिंग के आर्चर के संजीवा सर हैं, हमारे यहाँ पे उनकी शूटिंग जो एयर पिस्टल, जैसे हरियाणा इज द बेस्ट शूटर्स दे आर गिविंग, तो उस एंगल पे हम कितना काम कर पा रहे हैं, दिस इज द विजन. तो दे आर द 3 वेंचर्स. हम अगर शूटिंग सेंटर्स प्राइवेट ओन को दे सकें कि हाँ भाई आप राइफल प्रैक्टिस कीजिए, आप आर्चरी प्रैक्टिस कीजिए, और हम एक मतलब 2 एकड़ या 5 एकड़ गवर्नमेंट हमको दे सके लीज पे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए. तो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक, तो क्या उस ग्राउंड पे हम कितना काम कर पा रहे हैं. तो दीज आर द 3 वेंचर्स जो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत आगे ले जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण है.
जी जी, थैंक यू। मैं सुधीर कुमार सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगा। सुधीर कुमार जी एमडी हैं मेधा डेयरी में, और मुझे याद है मैंने झारखंड, रांची और कई बार ट्रैवल किया, वहां पे रूरल बेल्ट में गया, तो वहां मुझे कुछ ऐसे केस स्टडीज मिले जहां पे कि लोग लॉकडाउन कोविड से पहले जो बाहर गए थे काम करने, दे केम बैक एंड दे स्टार्टेड देयर ओन डेयरी। तो मैं सुधीर जी से ये सवाल करना चाहूंगा कि डेयरी सेक्टर में किस तरह का अपॉर्चुनिटी है सर? देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी to tell about the development in Jharkhand. So normally the people they know Jharkhand for its mines, but now I'm adding now we'll know Jharkhand milk with mines, right? So milk will give the nutrition and mines will give the money. So I want to make a combination of these two things, and I find a tremendous scope of it, and we are doing it. You will be surprised that in 2014 we started the federation. For namesake it was started on 2008, but actually we took over in 2014 with 11,000 liters of milk. And you will be surprised that within this span of 4 to 5 years, we are collecting more than 1,70,000 liters per day, and giving employment to more than 33,000 person at village level. The best part is, I always say, people go from Dumka to Ladakh, people flag off the green flag to go to Ladakh to work. Why? We have plenty of work. We have got money, we have got mines, we have got the milk also. If you remember correctly, people used to say, जब बिहार से दूध आएगा तो यहाँ दूध बटेगा, तब लोगों को दूध मिलेगा, चाय तब मिलेगी. But thing is different. I take in other way. Or the best part is that still in Jharkhand, around 89% is the nondescript animal. So if you do some work on that, we are working on that line, just improve the breed of that. And the best part is that the milk which we are collecting, is a majority of them is the A2 type, because there is still the practice of grazing in that area. Right. Hardly there's any stall feeding. Right. But then I'll say that slowly we are, when our industry is attracting the youth, they are coming. I can name one person, Indradev. Basically, by profession, he was an engineer. Rather, he is engineer. But then he left his job in Bangalore. He started here. And at the moment, around 2-3 days back, I visited his farm. He is having more than 35 cows. Not only that, now what we are doing, we are putting gobar gas plant at their household. So people are using that gas. So for experiment, we started in one village, and more than 100 beneficiaries are there. So what we will do, we'll collect the slurry which will come out from the gas, and then that will be converted into DAP, and the cost of DAP will be hardly 14 to 15 rupees per kg. In the market, if you go, it's more than 20 rupees. So we will provide 2 rupees per kg cost of the slurry also. So even when milk, this cow is not in milk, when it's a dry period, during that period also, they will get some sort of, suppose minimum 15 to 20 kg of dung will be there. So that will be purchased. First, they will make gas out of that, and the slurry will be purchased as we collect milk through our milk tanker. So similarly, it will be taken, it will be tested for its bricks, and based on that, the payment will be made ranging from 1 rupees 50 paisa to 2 rupees 50 paisa. So even during that dry period also, they will able to sustain. Then normally क्या होता है, वो छोड़ देते हैं गाय की, भाई अभी तो दूध नहीं दे रही है, जाओ अपना जहाँ सर के आने आओ. So that creates problem for the farmers, because that heat cycle will get disturbed. So now slowly we are educating them, and you will be surprised that lot of people now they want to join our dairy industry. We are making the cooperatives in different part of that. So recently we have covered all the 24 districts. We have touched rather. Otherwise, basically in 12 districts itself, we were collecting around 1,70,000. Recently, in last 3 years, we have constructed 3 this dairy plant, one at Sahebganj, one at Sarat near Devghar, and one at Palamu. Out of that, 2 has been already started, and I find people say, "Hame to gaay dilwa do." And very recently, only 4-5 days back, government has taken decision to provide this cow at a subsidized rate of 90% subsidy will be there on that. So now I find a lot of people, they want to come back from outside. They want to go for the cattle rearing.
because we give the guarantee of the milk, we'll purchase it. And probably that is the reason this type of revolution has already come in Gujarat, Punjab, and other places. So I remember when I was in college, National Dairy Research Institute, Karnal, at that time, per capita consumption was 110 grams, which has now increased to 400 grams per person in India. And very, I can say I'm very pleased to say that India is #1 milk producing country in the world. And the second is the US and China. So the gap between US and India is too much. I think it will take another 10 years if they want to touch our figure. So as on date, if you see that, if you say the average production of our crossfeed is 6.5 liters per day. If we do some work on that properly, proper feeding, then treatment and all, I'm sure if you can even convert it to 12 liters, because normally other country, if you go to, when I visited Switzerland, I found that the minimum production is 30 liters. So even we reach 12 liters. So at 6.5 liters, we are #1 milk producing country and producing 210 million metric tons of milk in India. So it will be difficult for others to touch. And when we make our breed improvement program and we just double the production per animal, probably we will flood. We'll flood the entire world with milk. So that is the thing. And I see, because in other places like Gujarat, it has already developed. Punjab, it has already developed. There is a lot of potential in Jharkhand to develop, right? So I believe and I see, and because of that, I have given a project that we will construct another 5 plants in different part of that. And we say people that you stay at your home, will provide. Recently, NDDB, they have started procuring good quality cattle from other part of the country, will give to the government, and government will pass on to the different, particularly the tribals, because they really need help. They really need help, and they take a lot of care of that. Once you just train them, then they feel that what they are doing. Because our payment system is like every 4, 14, and 24. We pass on the cost of the milk in their account. And Jharkhand was the first state to make 100% payment in the beneficiary's account towards cost of milk. We are now providing cattle feed plant. We have established a cattle feed plant. We are supplying balanced cattle feed to the farmers. So I say you come join us. We'll provide you the seed for the green fodder. We'll provide you balanced cattle feed, and we'll purchase all your milk, whatever surplus milk is there, that we'll purchase. And I believe that our next white revolution will be from the eastern part of the country. यूथ का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, यूथ कितना आएगा इस सेक्टर में, क्योंकि इनिशियली अगर आप देखें तो ये सेक्टर बहुत it doesn't look like a very attractive sector. I mean, once upon a time, farmers and all those people who have cows and who have cattle, No. Normally, if you talk somebody that वो किसान है, दूध उत्पादक है, मिल्क प्रोड्यूसर है ना, तो आप वो धोती और वो पहने हुए इमेजिन करते हैं. But come and see our farmers. They are in full pant jeans also working in the cattle farm. मैं बताया इंजीनियर है वो, इंद्रदेव करके जो लड़का है वो इंजीनियर है. And he's so, yesterday also he came to meet me कि सर हम और कुछ लोगों को इसमें लाना चाहते हैं. Most welcome. Not only that, now I am planning to take that, let the woman to take the lead. And you will be surprised that in our board of director, there is one lady, she is a tribal lady. She has got around 9 cows. And she said कि सर इसका जो आमदनी होता है वो उससे ही मैंने अपने 3 लड़कियों, क्योंकि उसका एक लड़का था लेकिन वो शहीद हो गया करीब 5-6 साल पहले, और उसकी 3 लड़कियां हैं. 2 लड़कियों ने जॉब किया, मतलब ये दूध के धंधे से. So I'm really impressed, and I feel like that is I'm not doing the job, but rather I am working for a really needy people. तो काफी लोग हैं, बहुत संभावना है, और जिस टाइप का है ना, you get lot of labor in Jharkhand, and that is the beauty of Jharkhand. If you can just give them an opportunity, they will definitely do. Nobody wants to go away from home. मैं चाहूंगा कि मिस्टर खिरोड कुमार बारिक जी के पास चले. HR हेड है वो ESL स्टील लिमिटेड में. हालांकि हैवी इंडस्ट्रीज में स्टार्टअप का बहुत कुछ से नहीं होता है, बट फिर भी आप स्टेट में जो स्टार्टअप कल्चर है और जिस तरह से स्टार्टअप कल्चर बन रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा, इफ यू कैन थ्रो लाइट ऑन इट. अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का है,
हमारी सारी एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल जो वेंचर कैपिटलिस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है, जिसमें वो फंडिंग की बात करते हैं 250 करोड़ फॉर दिस लिक्विडेशन इन द फर्स्ट ईयर, देन सस्टेनिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू ऑल द स्टार्टअप कंपनीज। आई थिंक जो कंपनी जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं, आई एम श्योर दैट दैट इज गोइंग टू नरिश देम एंड सस्टेन देम एंड हेल्प देम टू सस्टेन द एफर्ट्स। सबसे पहले एक बात होती क्या है, एनी स्टार्टअप कंपनी, एनी वेंचर कैपिटलिस्ट, और देखता क्या है कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो यूथ कर रहा है, वो सस्टेन कैसे हो। बिकॉज मार्केट डेटा ये कहता है कि एनी एक्टिविटी जो एक साल में जनरेट हुई और सस्टेन वो होती नहीं है, 90% ऑफ एक्टिविटी दे गेट डिरेल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ जेनेसिस। तो उनको सस्टेन करना, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का की पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल फॉर हैविंग द वेंचर कैपिटलिस्ट, then financial pumping into the venture through the venture capitalist, that is literally going to help. हम यहाँ ESL बोकारो में we are dedicated for the growth of Jharkhand. हमारा फोकस ही एंटरप्रेन्योरशिप है। हम चाहे हमारे जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, be it we are having the archery academy and we are nurturing the talents in and around the state and in the district, जहाँ हमारे रूरल सेगमेंट के पीपल हमारे से जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनको हम ट्रेन करके नेशनल प्रोग्राम तक हम भेजने का चेष्टा कर रहे हैं, एंड दे आर फैबुलस टैलेंट्स। सेकंड, हमारे जो स्किल सेंटर्स हैं उसको हम नरिश कर रहे हैं, वी आर सस्टेनिंग की हाउ थ्रू दी वी आर एबल टू कल्मिनेट द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इन द यूथ। सो ये हमारा एक फोकस रहा है, थैंक्स टू दी चेयरमैन एंड दी वाइस चेयरमैन, जिनके फोकस से हम लोग ये कर रहे हैं। And if you could see the employee volunteerism, हमारे सारे HODs और हम सब, हमारा एक वीक में अब 2 टेक्निकल क्लासेस हमारे क्रेडिट कर रहे हैं हमारे जो गांव के आसपास के लोग, ताकि हमारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनको कोई गैप ना लगे जब वो एक्टिविटीज वो करें, जब वो आइडेंटिफाई करें कि क्या नर्चरिंग करी जाए, और जो टैलेंट है, जिनकी थॉट प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप के होना चाहिए, वैसा वो उनको रेडीमेड एक टैलेंट मिले। दिस इज व्हाट हैज बीन द फोकस एरिया, जहां हम उनको नॉट ओनली दी स्कूल करिकुलम पढ़ाते हैं, बट आल्सो वी गिव आवर इनपुट्स कि हाउ दे शुड थिंक, हाउ व्हाट इज द एबिटा, व्हाट इज फ्री कैश फ्लो, उन्हें कैसे बिजनेस रोल मॉडल समझना चाहिए, कैसे आमदनी होती है, कैसे बचत होती है। सो ये सब नॉर्म्स जब वो बच्चा एक ट्रेनिंग क्लास में, एक स्कूल के में अगर उनको स्कूल के करिकुलम में अगर समझाया जाए तो वो काफी हेल्प होगा। दिस इज व्हाट वी आर फोकसिंग अपॉन। ये जो हम स्कूल के बाद में जो हम कोर्सेज कर रहे हैं, दैट इज लिटरली हेल्पिंग दोस कैंडिडेट्स टू नर्चर द गैप। नाउ अगर मैं बात करूं वेदांता के स्पेसिफिक कार्यक्रम में, जैसे हमने फोकस किया ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप की, अभी बात हो रही थी झारखंड यस इज अ ट्राइबल नेशन, बट ये जितना पोटेंशियल झारखंड में है उतना पोटेंशियल किसी और सेगमेंट में नहीं है। आप बात करें, अभी बात हो रही है कि हमें बायोलॉजिकल और बोटानिकल वेजिटेबल्स मिले, और मे बी दी विच इज होम ग्रोन, विच इज हम बात करते हैं, तो वो पोटेंशियल हमारा सिर्फ इन द स्टेट ऑफ झारखंड है। हम अभी डेयरी सेगमेंट की बात कर रहे थे, यस डेयरी में ह्यूज पोटेंशियल है, बट जो झारखंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी काफी सपोर्टिंग नेचर में है। आई थिंक बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर ये टैंडम और ये जर्नी को और आगे लेके जाया जाए, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ विन-विन, एक्ट एज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द इंडिविजुअल एंड फॉर द स्टेट। I think besides all these sectors which you have talked about, I think renewable energy, government has also come up with a very good policy where they want to phase out this coal-based energy, and renewable energy Correct. will take place. So if Correct. you can throw some light on it. Correct. So जीवन जी, I was coming on that part. अगर हम renewable power की बात करें, thanks to the central government and the state government directives, wherein we have a mandate to comply to the renewable power agreement, जिसमें हम वेंचर आउट करें जो भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, बी इट द पावर फ्रॉम द थर्मल कोक एंड ऑल। सो अगर हम फोकस करें थ्रू द मे बी द बायोमास, बी इट थ्रू द सोलर, बी इट थ्रू द हाइडल एनर्जी, आई थिंक दैट इज व्हाट, उसमें हम कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप वेरियस यूथ एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, वो हमें फोकस करना चाहिए। बिकॉज हमने भी हमारी कंपनी में हमने स्टार्ट किया है, we are having a collaboration with the state government for कैसे हम youth को हम onboard कर सकें for the renewable power agreement,
And I think this is going to be a win-win situation for, because हमारा अभी जो गोल है, हम कैसे हमारे ESG गोल्स को हम मिनिमाइज करें, हम कैसे हमारे कार्बन एमिशंस को मिनिमाइज करें, ये लार्जर पर्सपेक्टिव में हमारा वर्क हो पाएगा, सो दैट हमारे फ्यूचर जनरेशंस can sustain the load and the pressure of the carbon emissions. So yeah, so with this I would like to end my speech. Yeah. Thank you very much. Now I want to invite Mr. Sanjeeva Singh ji, because Sanjeeva Singh ji ने बहुत काम किया है स्टेट में, और स्टेट के लिए भी किया है और अभी भी कर रहे हैं. So स्पोर्ट्स की बात करें हम, तो आप स्टेट को किस तरह से, आप जो स्टेट में यंगस्टर्स हैं उनमें स्पोर्ट्स को लेकर के कितना एंटरप्राइजिंग उनको देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप स्टेट को कहाँ देख रहे हैं स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो? Yeah. So first of all, thank you for inviting me. It's a wonderful chance for talking to all of you. The national games are going on, so I'm going to speak from the national games. So I'm traveling. So one of the सबसे बड़ी बात जो हम बताना चाहेंगे कि देखिए, COVID has been disaster. At the same time, it's a boon. So I will look from COVID from the boon perspective and look at how the youth can change the entire history of the country. See, COVID has taught us two things. One is the wellness part, the other is the fitness part. Today we have realized that if you are not fit, you will not be able to survive another debacle of the COVID or another variant of the COVID. So what has opened up for all the youth is, can they start fitness industries? Can they move into wellness industries? Wellness could be organic food. Fitness could be multi-gymming, doing serving fitness training. The biggest thing which I see is the online fitness regime which has caught up. People have realized this. People can utilize this, and that is one big area which has opened up for the youth, that they can move into the fitness industry, especially the sporting youth, the young youth of the Jharkhand. They can move into it. That means because with the onslaught of fitness, what has happened is the world has risen. They know sports is definitely one of the areas which can help you to be more fit and therefore survive any situation like a pandemic like the COVID. So what is happening is that if you are able to open up academies which could be entrepreneurial in nature, where the youth can participate and therefore can provide services. So you don't need to depend. The government can only give them the infrastructure. Right. Thereafter, the youth can take up different elements of the sport and they can run the sport. So they not only are earning medals for the country, but they're also helping us to survive, because whether it's a coaching, and now we are not only talking about coaching, we are talking about the complete ecosystem. When we talk about the complete ecosystem, it's the physiotherapist, it's masseurs, it's psychologists, it's dietitian, it's nutritionists. All of these people get involved, the strength and conditioning trainer. So it's a complete universe. Now, this entire universe, when they come together, so there are various options getting opened up now, and which the youth can adopt and take up, and therefore, so sports is becoming industry, not only a service industry toward the fitness, but also making people engaged. Because today, when we look at children, of the future, we want them holistic children. We don't want them only educated children. I will always, every parent want that his son should be a holistic in terms of sports and studies. So therefore, the focus is there on the sporting curriculum. It's getting added into the curriculum. So that is creating a new entrepreneurship area for the youth, that they can move into the service industry related to wellness and fitness. So that is one part. The other thing is also about manufacturing. So like, as we said, when we look at indigenous games like archery, you're making arrows, you're making targets, you're making buttresses, you're making stands. So you're moving into another sector of the industry, which is more of the thing which is providing the infrastructure in terms of the field of play. So that's another area which is opening up. Now, apart from that, the other thing which has opened up because of the COVID, which is for the youth, will be, I'll say, is the digital sector. When you talk about the digital sector, COVID has taught us that we need to be digital. And therefore, if you look at industries in and around Jharkhand, whether it's the steel industry, the mining, or the dredging industry, now people are coming up. People are becoming more and more literate in computers. They are trying to start, whether it's data mining, it's data analysis, the digitization of the data. So that is where people are creating call centers,
So these are the other options which are coming up, where people sitting in their own place can train youth in the travel use and train them into data center operators, train them into data analyst, data mining part. So the data warehousing part is also becoming a keen area which is opening up to the travel youth, which they can adopt sitting at home, where you are now having most of the engineering institutes which are coming in and they're starting the entrepreneur, whether it's a Building Institute of Technology, whether it's the other National Institute of Technology, they're setting up entrepreneurial cell, which is looking into all such areas which can be manned, so that is the other part which is coming up. The third part which is coming is from the manufacturing industries. Now, manufacturing industries, whether it's Tata Steel, Tata Motors, or any other industries which are there, now the outsourcing, because of the conservation of people, what they're doing is they're moving into outsourcing. The outsourcing is helping to create entrepreneurship by creating small products which are going to fit into the car, or small products which can go into the, so this is again coming up. And the engineering related services are coming up as a entrepreneurial. For example, if we look at many of the services from Tata Steel will getting outsourced. So whether it's fire, whether it's cleanliness, whether it's housekeeping, so all related services are now getting outsourced, which is again creating entrepreneurial. People are coming forward. People are setting up their small working spaces into different areas related to the engineering industry. So manufacturing is creating entrepreneurial cell. The education sector, the institutes which are there, they are creating education which are more into the digitization part. And the biggest thing which is also coming up, as you rightly said, is the knowledge which is getting more about renewable energy and sustainability is also moving people for rooftop solar energy. In a very large part of the, this thing is very good, they get sunlight. So today when people are getting educated, people are moving into solar and how do you utilize the renewable energy into moving into various, whether it's and also the onslaught of the diminishing of the CO2 emissions are pushing cars into electrical. So renewable is not only moving into that, it's moving into the travel sector also. So more and more cars are becoming battery operated. So that is again creating another source of avenue, that where the youth can move into the travel segment, the tourism sector, and therefore can also work. So whether it's a tourism, whether it's, which is again coming out as an output of the renewable energy, the digitization part, where the whole world is working and where in rural youth of this are getting chances, they're creating a lot of computer education is happening because of which the digitization is happening. The sports part, which is both in terms of the entrepreneurship, in terms of making field of play equipment, in terms of service related, in terms of fitness. So all such area related to engineering, manufacturing, and as people have already talked about, the irrigation part, which is now wellness part, moving into organic food. So that is another area which is coming up in a big way. While dairy is there, but organic food itself is creating a new option, a new avenue. And even in organic food, the new exotic vegetables part, that is coming in. It is possible because we have a large irrigation area, a large agricultural portion which can move into that. So it's a question of educating the youth. And with the youth education, I'm sure a lot of areas will open up. And these are new areas coming up which can really help the youth of Jharkhand to move into the entrepreneurial and therefore not only increase the income and the overall GDP of Jharkhand, which will become one of the most, as I said, there's most natural resources. It's the best state in the world, in the country, but it should be also in terms of entrepreneurship going forward. Thank you. Yeah, I think you talked about wellness. So we have Dr. Anuj Kumar here. So he's from Bhagwan Mahavir Medica Superspecialty Hospital. तो अनुज जी, हम देख रहे हैं कि देश में भी मेडिसिन के फील्ड में बहुत कुछ हो रहा है. मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं. मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारी ई-कॉमर्स की लाइन पे काम हो रहा है, डिजिटल की लाइन पे काम हो रहा है. तो झारखंड में आप कितना देख रहे हैं ये जो पूरे देश में हो रहा है, कई जगहों में हो रहा है, तो झारखंड के अंदर ये लोगों में मेडिसिन को लेके, मेडिकल फील्ड को लेके किस तरह का एंटरप्राइजिंग माहौल है? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बढ़िया ये टॉपिक है और बहुत रेलेवेंट टॉपिक है. खास करके जब से कोविड हुआ है तब से एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया आयाम हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो. अगर हम हेल्थ की बात करें, मेजर इशू है. वो इशू क्या है कि
ओवरऑल एशिया में देखें या वर्ल्ड में देखें, इंडिया का जो जितने भी हेल्थ इंडेक्स हैं उसमें वी आर कंसिस्टेंटली अमंग द वर्स्ट डूअर्स। जो सबसे निचले पायदान पे जो है वो हम लोग कंसिस्टेंटली हैं, चाहे आप किसी भी साल का उठा लीजिए, दैट वी हैव बीन डूइंग। और उसमें भी जो झारखंड है वो बाकी सब स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑल क्रिपल्ड है। इस फैक्ट के बावजूद जो हमारा एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे, दैट इज वेरी वरीसम। व्हाई? बिकॉज we spend only 2.1% of our GDP on health if we are looking India as a whole. Right. झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड जो है वो हेल्थ पे करीब 5.1% अपने बजट का वो इन्वेस्ट करता है। एंड अमंग ऑल द स्टेट्स जिसका एवरेज है 5.3, हम उस एवरेज से थोड़ा ही सही लेकिन हम नीचे। सो डेफिनेटली हेल्थ इज नॉट a very important priority as far as the governments are concerned, और चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। इनफैक्ट इस साल कोविड की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो 2.1% गया, अदरवाइज हम सिर्फ 1% जो है जीडीपी का वो खर्च करते हैं हेल्थ पे। नाउ जो WHO है, WHO का कहना है कि 1% ऑफ जीडीपी शुड बी मिनिमम ऑन ओनली प्राइमरी हेल्थ केयर। लेकिन हमारा टोटल हेल्थ बजट जो है वही हमारा 1 और 1.5 और 2% के बीच में हम लोग घूम रहे हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप जो हेल्थ में है उसको मैं 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो आइसोलेटेड क्लिनिक्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, एक उनका एंटरप्रेन्योरशिप है, और एक पब्लिक हेल्थ का एंटरप्रेन्योरशिप है। जो पब्लिक हेल्थ का एंटरप्रेन्योरशिप है, दैट इज इट इज लुक्ड अपॉन कि इट इज अ नॉन प्रॉफिट जॉब। मतलब आपका एक परसेप्शन है कि मतलब अगर आप हेल्थ पे खर्चा कर रहे हो तो आप चैरिटी कर रहे हो। तो वो एक हमेशा जो है एक जो नए एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ एक ये हमेशा रहता है कि आप चार्जेस नहीं कर सकते एज फार एज यू आर लुकिंग इनटू द पब्लिक हेल्थ। तो लेकिन कॉन्ट्ररी अगर आप देखोगे तो पब्लिक हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है कि स्मॉल स्टेप्स कैन ब्रिंग वास्ट चेंज एंड दे कैन ब्रिंग वास्ट चेंज इन द लाइफ ऑफ मिलियंस। ये एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है पब्लिक हेल्थ का वो ये है कि आप छोटा, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन अगर आप देखेंगे तो झारखंड में अभी टेलीमेडिसिन झारखंड गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर, एंड इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और कई लोग जो है उससे, क्योंकि यहाँ पे रेफरल सेंटर्स जो है वो ज्यादा है और जो टर्शियरी केयर है वो कम है, तो जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, there is no way where they can communicate with a super specialist directly, right? Because we have a severe shortage of doctors. झारखंड में अगर हम करीब देखें तो 16,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। Ideally, it should be 1 doctor for every 1,000 population. Right. So we are, short of numbers. Same thing goes with PHC. जैसे टोटल जो है हमारे पास करीब जो झारखंड का पॉपुलेशन है 3.25 करोड़, उस हिसाब से हमारे पास कम से कम जो है 1100 PHC होने चाहिए थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। बट व्हाट वी हैव इज हार्डली 300 समथिंग 303 या 304 PHC हैं, और उसमें भी सिर्फ 296 जो है वो फंक्शनल है। तो हमारे पास नंबर्स बहुत शॉर्ट है। तो इसको अगर आपको काउंटर करना है तो ओनली वे अहेड इज टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के जो आने वाला 5 साल 7 साल है उसमें आप इस गैप को फुलफिल नहीं कर सकते हैं विद अ नॉर्मल पेस। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है। इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हम देखें एज सच कोई स्टार्टअप वगैरह तो बहुत ज्यादा नहीं आए हैं हेल्थ को लेके झारखंड में। जो झारखंड की जो स्टार्टअप पॉलिसी थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, और उनका था एटलीस्ट कि हम 1 लाख स्क्वायर फीट का इंक्यूबेशन स्पेस रखें, और कम से कम 100 स्टार्टअप प्लान था विच कैन ब्रिंग सब्सटैंशियल सोशल चेंजेस, जो 2016 में जो पॉलिसी आई थी। इनफैक्ट जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है जो 2021 से अभी लागू होना है,
21 से 26 तक, उसमें भी उन्होंने जो पर मंथ का इंसेंटिव है फॉर एंटरप्रेन्योर्स उसको बढ़ाया है, वो 12,000 से 15,000 किया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्टार्टअप जो है पब्लिक हेल्थ को लेके हमारे पास नहीं आई है। हाँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में वी आर डूइंग गुड, और इनफैक्ट अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो 2017 में हमने एक सेंटर स्टार्ट किया था विच वाज द फर्स्ट CBCT सेंटर ऑफ झारखंड, जिसमें आप बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर पे आप सिटी स्कैन ले सकते हैं फेस का। वो हमने 2017 में स्टार्ट किया था। 2017 से पहले झारखंड में वो सेंटर नहीं था, और इंडिया में वो सेंटर को आए हुए करीब 20 साल हो गए, तो हम काफी पीछे हैं। सिमिलरली दिस ईयर वी हैव डन अ फुल फेस जॉ ट्रांसप्लांट सर्जरी, जो पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का पहला सर्जरी था जहाँ पे हमने फेस ट्रांसप्लांट किया था। तो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो अच्छे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स हम लोग ले रहे हैं। अभी हाल में यहाँ पे एक पेट स्कैन भी खुला है। टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ पे स्टीरियोटैक्टिक ब्रेन सर्जरीज हो रही हैं। तो ये सारे को डॉक्टर संजय हैं, वो लोग स्टीरियोटैक्टिक ब्रेन सर्जरी करते हैं। सो ओनली सेंटर वेयर दे डू सच काइंड ऑफ सर्जरी, न्यूरो सर्जरीज इन झारखंड। तो इंडिविजुअल बेसिस पे वी आर डूइंग प्रीटी गुड। नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, डिजिटल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारा ही एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसको हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं। वी आर मूविंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। कि आप देखते होंगे कि पहले जमाने में एक तो वो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग का इश्यू होता था, वो हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती थी। दूसरा जो रिपोर्ट्स थे, वो रिपोर्ट्स कभी खो जाते थे, कभी वो मिसप्लेस हो जाते थे, कभी चूहा खा जाता था, कभी पानी गिर जाता था। तो 50 तरह की समस्याएं जो थी वो होती थी, और टेस्ट इतने एक्सपेंसिव है कि आप रेगुलर इंटरवल पे वो टेस्ट करा नहीं सकते। तो वो सब को दूर करने के लिए हम लोग एक स्टार्टअप है हमारा, जहाँ पे हम लोग वो सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसको सेव रखेंगे। लेकिन पब्लिक हेल्थ पे झारखंड को अभी भी बहुत कुछ करना है। There is apart from telemedicine, there is nothing substantial which is going on in public health. उन्होंने definitely ambulance services पे कुछ start किया था, where they started like Ola sort of thing, जहाँ पे बाइक एम्बुलेंस, वो टोल फ्री नंबर था, बाइक एम्बुलेंस की सुविधा वो दे रहे थे। बट अगेन एम्बुलेंस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट ऑन अ बाइक। आप बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप बाइक पे कैरी नहीं कर सकते, तो अपने चैलेंजेस थे इसके। तो पब्लिक हेल्थ को लेकर डेफिनेटली हमें काफी आगे करना चाहिए। जो वेज अहेड मैं देख रहा हूँ कि जो झारखंड इसको स्टार्ट कर सकता है, वो ये है कि दे कैन स्टार्ट गिविंग इंसेंटिव ऑन ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसे रोबोटिक सर्जरीज बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर कोई अस्पताल जो है वो अगर रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करना चाहता है, गवर्नमेंट कैन दे कैन ईदर दे डोंट नीड टू फंड इट, बट एटलीस्ट व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गिव इट एट अ चीपर रेट। आप EMIs इजी EMIs का ऑप्शन दे सकते हो, गवर्नमेंट बैंक से फाइनेंसिंग इजी कर सकते हो। वैसे टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए जो टेक्नोलॉजी झारखंड में बहुत अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो ये एक है जो कि झारखंड कर सकता है और करना चाहिए बिल्कुल। और बाकी इन जनरल अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स तो हो रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे startups are coming up, people are coming forward, they are coming up with their ventures. But public health, when we talk about public health, as you believe that nothing much is happening and a lot of things should happen. आपका अच्छा, ये बहुत अच्छा व्यू है। आई थिंक मैं चाहूंगा कि हमारे जितने पैनलिस्ट हैं वैसे उनसे एक क्विक सवाल है और एक छोटा सा क्विक जवाब मैं उनका चाहूंगा कि वेयर डू यू वांट टू सी द स्टेट 5 years from now? अगर हम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, वेयर डू यू वांट टू सी द स्टेट 5 years from now? मैं पैनलिस्ट इनवाइट करूंगा। खिरोड कुमार बारिक जी, आप छोटा सा जवाब। Yes, so I would like to see this state not as a backward or the tribal state, but as a employment generation state, wherein all the IT base has to be. This is the bottleneck of the state. This state has to be seen as an IT centric industry, and Dr. Anuj was also hitting on that term as well. Biotechnology and the digitalization. This is the need of the hour. On the basis of it, a industry or the state can sustain the economy. Okay, Professor Bhagwan Singh ji.
सर 5 साल बाद क्या होगा वो प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है, जो आज है वही होगा। आप क्या देखना चाहते, नहीं आप मैं क्या बता रहा चाहते हूँ, हैं? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एसी चैम्बर में बैठ करके, जैसे अभी सुधीर सर ने कहा कि वो कनेक्टेड है कम्युनिटी से, तो वो मिल्क पे काम कर रहे हैं, तो उनका एक्सपर्टीज नो डाउट बेस्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम एसी चैम्बर में बैठ करके किसान की पॉलिसी डिस्कस करते हैं कि जी ये सर कहना वही है, राउंड रॉबिन वही होगा जो है, अनटिल अनलेस हम मवाद से ऊपर उठ के बात करें। जो मवाद होता है ना, आई कॉल इट एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज मवाद इज दैट कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, हेनवाद, पूंजीवाद, दीनवाद, जितना ये वाद है ना, इससे ऊपर उठ के अगर हम बात करेंगे तो 5 साल बाद क्या 3 साल बाद हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए। हम विजन मिशन गोल पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो विजन हमारा 10 साल का होता है, मिशन हमारा 5 साल का होता है, ऑब्जेक्टिव और गोल साल भर के होता है। जैसे वेदांता सर ने कहा इतना टारगेट है, और संजीव सर भी कह रहे हैं, तो अगर अपना अपना हमारी मतलब हिंदुस्तान की आदत है अपना काम छोड़ दूसरे के काम में ग्रोइंग करना। तो जब तक इस आदत से हम नहीं उभरेंगे, जैसे डॉक्टर अनुज ने बहुत सही कहा, द ग्लोबल इंडेक्स हम लोग भी रिपोर्ट कर पढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, ये मेडिकल टूरिज्म इतना बड़ा हब है आज, ठीक, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा उस पर। तो हम काम कहाँ काम करें, तो करने दो चीजें हैं आज के हिंदुस्तान में। नंबर 1, जैसे आज हम आप कनेक्टेड हो गए, तो पहली चीज हमारा जील होना चाहिए कि पॉजिटिव चीजों में इंटरवीन करें। नेगेटिव चीजों में हम तुरंत घुस जाते हैं। हम बता रहे हैं हमारे यहाँ 20 अवार्ड दिए जाते हैं, कभी अखबार में नहीं छपता। 20 स्कॉलरशिप, अच्छे बेस्ट टीचर, बेस्ट स्कॉलर्स अवार्ड सर के यहाँ भी, संजीव सर के यहाँ भी होता है जी, नहीं छपता। स्टेडियम में आया नहीं छपता, लेकिन मीडिया छापती क्या है, स्टेडियम में जरा सा किसी का झगड़ा हो जाए बस फ्रंट लाइन में छप जाएगा कि ये खिलाड़ियों के बीच झगड़ा हुआ। हमारे यहाँ जरा सा हो जाए छेड़छाड़ हुआ। वी हैव टू क्रिटिसाइज नेगेटिविज्म एंड प्रमोट पॉजिटिविज्म। हर जगह समस्याएं हैं, लेकिन हम समस्याओं का अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें तो हम 5 साल नहीं, झारखंड बहुत रिच स्टेट है, लेट मी टेल, एंड बहुत डेडिकेटेड पीपल। इट्स रांची, आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री, तो मैं ये जानता हूं कि लोग बुरे नहीं, सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी जाती है कि वो बुराई पे उतर। वी आर नॉट करप्ट, वी आर फोर्स्ड टू मेक करप्शंस। तो उसका एक ही इलाज है सर, अपना अपना काम करें, अपने काम में जितना फोकस हो जाएंगे, दैट जापानीज डज। जापान आज इसलिए आगे है कि उनका कंपटीशन खुद उनसे है, दे आर नॉट कम्पीटिंग अदर्स। दे आर थिंकिंग कि यस्टरडे अगर मैंने 3 घंटे काम किया तो आज क्या मैं 3.25 घंटे काम कर सकता हूँ, कल क्या मैं 3 घंटा 20 मिनट काम कर सकता हूँ। दिस इज देयर ओन कंपटीशन। एंड अर्थक्वेक के मामले में वो 7.7 अर्थक्वेक झेलता है, यहाँ 5.5 रेक्टर स्केल पे अगर अर्थक्वेक आ जाए तबाही मच जाती है। तो वी हैव टू वर्क एंड कम्पीट ऑन आवरसेल्फ, एंड वी आर द बेस्ट, बट वर्किंग वी हैव टू। हम लोग जितना, तो हम 3 आई पढ़ाते हैं, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड इनोवेशन। RRI, R2I भी कहता हूं मैं। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन तभी आएगा जब आप डेडिकेशन से इनोवेट करेंगे। दैट इज द बेस्ट थिंग आई प्रमोट। अपने आप आपको रिस्पेक्ट एंड मिलती जाएगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता, बट वी हैव टू वर्क फॉर इट। वी हैव टू स्टॉप क्रिटिसिज्म एंड डू पॉजिटिविज्म। दैट इज माय से। थैंक यू सर। ठीक है सुधीर कुमार जी, आप व्हाट्स योर टेक ऑन दिस 5 years from now? इनफैक्ट मेरा इतना ही कहना है, सी झारखंड इज वेरी रिच इन श्रम शक्ति, राइट? वी हैव टू ट्रांसलेट दैट एंड डू इट इन ऑर्गेनाइज्ड वे। आज के दिन में इफ यू सी दैट पर कैपिटा कंजम्पशन इन झारखंड इज अराउंड 200 grams, which is almost 50% of the national average. So my take will be after 5 years it should be 450 grams per person. So that will do, that will create the employment, that give the nutrition and everything. And I think again Sanjeev ji will come back for the archery and everything in Jharkhand, because no, when I come out from the airport, I mean I see वो निक्की प्रधान का लगा हुआ है, सलीमा टेटे का लगा, आई फील एलिवेटेड कि वो कितने यहाँ पे टैलेंट है। तो क्यों नहीं इसका कॉम्बिनेशन करें, न्यूट्रिशन हम उनको दें और उनको और मजबूत करें, ताकि जो तीरंदाजी में जो अच्छा कर रहे हैं या हॉकी में अच्छा कर रहे हैं तो और दुगने शक्ति से करें। तो जब भी 177 grams पर कैपिटा कंजम्पशन है झारखंड का, आई वांट टू मेक इट 400 to 450 grams per day,
शायद इससे अगर हम लोग ये कर लेंगे तो डेफिनेटली विल क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीपल विल नॉट गो आउट ऑफ झारखंड. वो श्रम शक्ति जो है दैट विल ट्रांसलेटेड इनटू मनी, मिल्क एंड माइंस. संजीवा सिंह जी, आप बताएं. So all my colleagues are more learned than me and they have already spoken a lot. I can only say and wish that Jharkhand should be sporting. So in the next 5 years, I see them at the sporting state as well as a fit state, and I feel it as a digital state. If you are a fit, you are sporting, and you are digital, the world will be at your feet, and you will win laurels everywhere. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर अनुज कुमार जी, आपका क्या कहना है इस पे? मैं तो बड़ा छोटा सा है मेरा सपना कि अन्न के अभाव में और इलाज के अभाव में मौतें ना हो. हम इतना अचीव करें, ये मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि होगी. जी, thank you very much. I'll thank everybody for participating here. Very valuable comments, very valuable views. इसके साथ मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ. With thanks to everyone. Thank you very much.